YouTube channel. So guys, let's start our study session and बीच बीच में मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा, ठीक है? चलिए. शायद उल्टा दिख रहा हूँ ना मैं आप लोगों को. एक्चुअली फ़ोन साइड में चार्ज में लगा हुआ है. बजट कम है ना, DSLR नहीं है अपने पास.
सेकेंड ड्रग्स कौन से होते हैं? डीपी फॉर्मेटर्स, टाइड ड्रग्स, टाइड ड्रग्स आर GLP-1 एनालॉग्स, ठीक है, और सेफोनिलुडियास आर राइट और साइड ड्रग्स, और मेग्लेटिनाइड आर ग्लिनाइड ड्रग्स, ठीक है। तो ग्लिपराइड और ग्लूकान साइड इफेक्ट is increasing weight gain, several inhibitors of the body sensitive ATP sensitive protein channels, inhibitors of the ATP sensitive protein channels, glycemic weight gain, contraindication, renal failure, Sarcoidosis, contraindications, hepatic failure, ठीक है। inhibitors of the ATP sensitive protein channels, और दूसरा कौन सा है?
secretions are best used for decadent before here. Answer is organic food poisoning, atropine, aflatoxin, aflatoxin. All secretions are best used for all secretions are best used for intestines, sodium, and all. Or how to cause system depressed, system CNS depression, CNS depressed, respiratory depressed, general condition depressed, CNS respiratory general condition, CNS respiratory general condition, medical system depressed. Answer is forces, CNS respiratory general condition depressed, answer is appearance management is naloxone. तो एनोफॉस्फेट्स अट्रोपिन अट्रोपिन देंगे, पायरोक्सिन देंगे, अट्रोपिन और पायरोक्सिन. ठीक है, सिंगल सेल रेसिपिड ओपियाइड्स नैलोक्सोन पेशेंट को मिलते हैं कम्प्लीट ऑफ पीसीएम. तो क्या देंगे, सिलेक्सिस्टीन, ट्रांसफ्यूजन, पीसीएम पेन एंड सिम्टम्स कन्वर्जन मेथेमोग्लोबिन, पेन कन्फ्यूजन कन्वर्जन और मेथेमोग्लोबिन एक्सचेंज ट्रांसमिशन. सीएस फ्लो कोवर्सलिटी पोइजनिंग पीसीएम, कोवर्सलिटी पोइजनिंग पीसीएम और सिस्टम फॉरेस्ट नैलोक्सोन और सेक्रेशंस like dropping of also like a CNS patient. Then you can go to access or manifest for the opioids, carbamates contain hemosophenol, thiazine. Okay, thiazine, carbamates, opioids, poisoning, opioids, carbamates, phenolphthalein, contain hemosophenol, recipe, poisoning, opioids, carbamates, poisoning, opioids, carbamates, poisoning, opioids, carbamates, contain hemosophenol, poisoning, opioids, carbamates, phenolphthalein, and contain hemorrhage, facilities, atropine, TCA, acidity, barbiturated, atropine, TCA, atropine, triaroxyl acid, ultrasonic acidity, barbiturated, sensitivity, learning for underperforming systems, eosinophilic, imperfect cycle, hypercholesterolemia, atropine, TCA, atropine, TCA, learning barbiturated, atropine, TCA, acidity, barbiturated, atropine, TCA, acidity, barbiturated, atropine, TCA, acidity, barbiturated, components of opioids, carbonates, opioids, carbonates, contain hemorrhage and phenothiazine. और इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर TCA, acidity, barbiturated, atropine. Clear? Antidotes. Acetaminophen की antidotes में gastric lavage with antibiotics, inflammation of the endothelial system, gastric lavage with antibiotics, inflammation of the endothelial system, alternate antidote is methionine. तो alternate antidote is methionine plus endothelial system और gastric lavage with 2 hours. Anticholinergic is neostigmine, anticholinergic is neostigmine, anticholinergic is neostigmine, aspirin poisoning, sodium bicarbonate, aspirin के लिए sodium bicarbonate तो पीजी में भी आ चुका है. aspirin sodium bicarbonate benzodiazepine fumarate. Benzodiazepine is fumarate. Benzodiazepine is fumarate. Fumarate beta blocker is glucagon. Beta blocker के लिए क्या देते हैं, glucagon देते हैं. Cyanide is hydroxycobalamin is preferred due to less risk of methemoglobin. Cyanide, hydroxycobalamin is preferred due to less risk of methemoglobin. Hydroxycobalamin is preferred due to less risk of methemoglobin. Alternate antidotes में nitrate, sodium nitrate. याद आ गया. ठीक है, तो acetaminophen, acetylcysteine, methionine और anticholinergics के लिए neostigmine, aspirin के लिए अपन देते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट. बेंजोडाइazepine के लिए अपन देते हैं फुमासेनिल. ब्लड ब्लॉकर के लिए देते हैं अपन ग्लूकागॉन, साइनाइड, हाइड्रोक्सीकोबालामिन, टर्नेटिजामिन, नाइट्रोसोडियम नाइट्रेट, डिजॉक्सिन के लिए डिजॉक्सिनिमिन, एफएबी, डिजिबैंड डिजिऑक्सिन के लिए डिजिबैंड इस्मिन, डिजॉक्सिनिमिन, एफएबी, पैरेंट के लिए प्रोटीन सल्फेट, आयरन के लिए डिस्फेरोक्सामिन, डिफेरोक्सामिन, पैरेंट के लिए प्रोटीन सल्फेट, पैरेंट के लिए प्रोटीन सल्फेट, पैरेंट प्रोटीन सल्फेट, आयरन डिफेरोक्सामिन, हर्बल लिगेशन, आयरन डिफेरोक्सामिन, आयरन डिफेरोक्सामिन, harbor irrigation, deferoxamine, harbor irrigation, iron is deferoxamine, GDM, deferoxamine, iron is deferoxamine, harbor irrigation, deferoxamine, insulin is glucose, hypoglycemia is hypocalcemia, hypocalcemia is hypocalcemia, hypocalcemia, यानी कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के अंदर प्राइमरी कैल्शियम ग्लूकोनेट इंसुलिन के अंदर इंसुलिन पोजिशन हुई तो क्या देंगे, ग्लूकोज और ग्लूकागॉन, आयरन के लिए डिस्फेरोक्सामिन, हर्बल इरिगेशन, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम ग्लूकोनेट इंसुलिन के लिए क्या देंगे, ग्लूकागॉन और ग्लूकोज मैग्नीशियम सल्फेट के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट ओपिएट्स के लिए क्या देते हैं, ओपिएट्स के लिए नैलोक्सोन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, वारफारिन के लिए Phenophosphatidylpropanozine, iron के लिए desfloxamine, lead के लिए penicillamine, blood के लिए penicillamine, iron के लिए desfloxamine, phenophosphatidylpropanozine, anti-epileptic drugs, anti-epileptic drugs का भी इसका नोट्स आ गया. तो एक्टिवेट सर्वर के लिए 72 रेडियोग्राफी फर्स्ट
hypercalcemia. IP normal saline is first step. IV normal saline is first step. IV normal saline is first step. Hypercalcemia. Which one of the following is a thrombin inhibitor? Thrombin inhibitor. Which one of the following is a thrombin inhibitor? Warfarin, carboxylan, apixaban, or dabigatran? Which one of the following is thrombin inhibitor? Vitamin K antagonist is the warfarin or coumarin. Warfarin or coumarin. Vitamin K antagonist. Vitamin K clotting into help with the anticoagulant warfarin or coumarin. Inhibitor thrombin injectable is heparin. LMWH enoxaparin. Inhibit thrombin directly under thrombin. Enoxaparin, deltaparin, low molecular weight heparin, low molecular weight heparin, enoxaparin or deltaparin. Direct thrombin inhibitor, indirect thrombin inhibitor. Inhibit thrombin and XA. Inhibit the thrombin and XA. Injectable. Inhibit thrombin and XA. Inhibit thrombin and XA. Injectable. Heparin, low molecular weight heparin, enoxaparin or deltaparin. Direct thrombin inhibitor is TOB. Bivalirubin, ergotroban or dabigatran. Direct thrombin inhibitor is oral dabigatran, ergotroban. Direct thrombin inhibitor is TOB or B. Bivalirubin, ergotroban, FDA injectable. Fola is FDA injectable. Fola is formulary. 10 inhibitor is formulary oxygen or lenacapavir or reducible. Vitamin K thrombin inhibitor is dabigatran. Indirect thrombin inhibitor, oral direct is big sodium dabigatran. 10 is oral dabigatran. What causes 10 inhibition? It's antiplatelet, very anticoagulant. These are anticoagulant. These are antiplatelet drugs. COX inhibitor, COX inhibitors, aspirin, COX inhibitors, aspirin, phosphodiesterase inhibitor, dipyridamole, or ADP receptor inhibitor is PCT, COX inhibitor, phosphodiesterase inhibitor, ADP receptor inhibitor, ADP receptor inhibitor, phosphodiesterase, COX inhibitor, ADP receptor inhibitor, phosphodiesterase, COX, phosphodiesterase, ADP receptor, COX, phosphodiesterase, ADP receptor, COX, phosphodiesterase, ADP receptor inhibitor, COX, phosphodiesterase, ADP receptor inhibitor, COX inhibitor is aspirin, phosphodiesterase inhibitor is the dipyridamole, COX inhibitor, aspirin, phosphodiesterase, dipyridamole, ADP receptor inhibitor is PCT. COX inhibitor, phosphodiesterase inhibitor, ADP receptor inhibitor, COX, phosphodiesterase, ADP receptor, COX, phosphodiesterase, ADP receptor, COX inhibitor is aspirin, phosphodiesterase is dipyridamole, COX inhibitor is aspirin, COX inhibitor क्या होता है aspirin, phosphodiesterase inhibitor is dipyridamole, COX inhibitor is aspirin, dipyridamole is phosphodiesterase inhibitor, और ADP receptor inhibitor is PCT. ADP receptor phosphodiesterase, COX, ADP receptor phosphodiesterase is dipyridamole, ADP receptor inhibitor is PCT. Rasupril, clopidogrel, ticagrelor, protein 2B3 inhibitor is EAT. Actifibutide, apixaban, tirofiban, etoposide, terpiban, actifibutide, apixaban. Physical anticoagulant can be used to die early. तो dabigatran 4 तो यही सही, ठीक है. यूरोसिन फॉर्मकोलिनस, apixaban तो नहीं है. B3 inhibitor is actifibutide, apixaban or terpiban. Actifibutide, apixaban, terpiban. Rasupril, clopidogrel, ticagrelor.
diffusion. Light index and light criteria are different. Yeah. फ्लूइड होते हैं ट्रांसलेट और एक्सलेट. ट्रांसलेट के अंदर क्या होता है ट्रांसपेरेंट, टी से ट्रांसपेरेंट, टी से ट्रांसलेट. एक्सलेट नॉट ट्रांसपेरेंट ड्यू टू मोर प्रोटीन एंड मोर एलडीएच इन ग्लूकोज. मोर प्रोटीन मोर एलडीएच इन ग्लूकोज तो लेस ट्रांसपेरेंट. ट्रांसलेट इज लेस than 0.5 greater than 0.5 is एक्सलेट. ट्रांसलेट इज लेस than 0.5 और एक्सलेट इज greater than 0.5. ट्रांसलेट less than 0.5 एक्सलेट greater than 0.5. less than 0.5 for translate is less than 0.5 for एक्सलेट is greater than 0.5. less than 0.5 greater than 0.5 less than 0.6 greater than 0.6. Translate is less than 0.5 और एक्सलेट is greater than 0.5. Translate is less than 0.6. एक्सलेट is greater than 0.6. greater than 0.6 greater than 0.6. ठीक है. Translate is less than 0.5 less than 0.5 greater than 0.6 greater than 0.6. Fluid radius less than 2 kPa. 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 तो ट्रांसपेरेंट less than 0.5 less than 0.5 लाइट्स इंडेक्स is fluid release less than 2 km. Fluid release greater than 2 km. Vital organs somebody can do. ठीक है. Vital organs is liver kidney and heart, liver kidney and heart, liver kidney, heart, liver kidney. System common for basis services first analysis, second system area, third is which regular to one maximum four is for should you under pressure and independent Korean impact four front and back and independent Korean impact in the center. Five is five family elements qualify for the common carcinoma basing common carcinoma is based on family elements qualify family elements qualify family elements qualify common carcinoma family elements qualify common carcinoma family elements qualify family elements qualify
3 1% precision 5 minutes polyposis early 10% prematurity HLA-MHC complexes minimum 6 kilometers general HLA-MHC complex Berger disease HLA-MHC complex Berger disease Berger disease 7th cystic fibrosis 8th Burkitt's lymphoma. He looks like it. Osteopetrosis, cystic fibrosis, and osteopetrosis and osteopetrosis and Burkitt's lymphoma. 8 9 is AVO, 7 AVO PCR is 922,000 diagnosis of form. Tuberous sclerosis 3 square 9. Tuberous sclerosis, Friedreich, Friedreich, Tennis Cowden, Cowden, stable mental lymphoma, lymphoma, 11 mental cell lymphoma, sarcoma, mental cell lymphoma, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा लाइव इंटरेक्शन कर लेते हैं. करुणा सिंह, गुड आफ्टरनून. मेघा डोंगरे, गुड आफ्टरनून. हाय, हेलो. सर उल्टे दिख रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं जोरदार. एक्चुअली फ़ोन चार्ज हो रहा था साथ साथ में. हे हाय, हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमेंटिंग.
Infective endocarditis condition is a criteria looks criteria is major infective endocarditis is which criteria looks criteria infective endocarditis looks criteria because the first present with a critical replacement greater than 3 times 20 kilo organism cardiographic evidence of the endocardial movement cardiac CT echocardiac cardiographic movement blood culture positive for cardiographic evidence or cardiac CT 8 cardiac CT 18 for body oxygen was FPG CT FPG 18 FPG it is FPG 18 FPG CT 18 FPG CT system is a criteria documented by that inspection. The PET beds, the blood culture positive cardiographic evidence surgical cardiacity and cardiacity, FTGCT, cardiacity, FTGCT, cardiacity, FTGCT and surgical inspection. Final criteria is time of BP, temperature greater than 38 degrees Celsius, immunological phenomena, temperature greater than 38 degrees Celsius, immunological phenomena, temperature greater than 38 degrees Celsius, temperature greater than 38 degrees Celsius, immunological phenomena, microbiological evidence, hospital blood culture, non-medical criteria, temperature greater than 38 degrees Celsius, immunological phenomena, temperature greater than 38 degrees Celsius, immunological phenomena, sports, microbiological evidence, positive blood culture, not meeting the major criteria, positive blood culture, time of BP is greater than 38 degrees Celsius, immunological phenomena, sports, temperature greater than 38 degrees Celsius, immunological phenomena, sports, microbiological evidence is positive blood culture not meeting major criteria, positive blood culture not meeting major criteria, positive blood culture not meeting major criteria, positive blood culture not meeting major criteria. ठीक है और embolic phenomena, vascular simulations, embolic phenomena, time of BP is temperature greater than 38 degrees Celsius, immunological phenomena, sports and response, microbiological evidence, blood positive blood culture not meeting major criteria, और embolic phenomena, vascular simulations, vascular embolic phenomena, vascular embolic phenomena, vascular simulations, myocardic aneurysm, embolic phenomena, vascular simulation, myocardic aneurysm factors, congenital heart infections or epitrachus, congenital heart infection, vascular phenomenon, simulation, cerebral spinal sepsis, physical examination, new valvular regurgitation, physical examination, new valvular regurgitation, physical regurgitation, time of BP और RC कहता epitrachus risk factors congenital heart disease, symptomatic bradycardia के लिए symptomatic bradycardia, terminal independent bradycardia, main block के लिए troponin bradycardia, symptomatic bradycardia, troponin, symptomatic bradycardia के लिए bradycardia, symptomatic bradycardia, bradycardia, troponin, calcium, PSVT के लिए adenosine, medical fibrillation, medical tachycardia के लिए lidocaine, ठीक है, paroxysmal supraventricular tachycardia के लिए adenosine और VF के लिए VFAPT के लिए lidocaine, ventricular fibrillation, ventricular tachycardia के लिए lidocaine, hypertension symptomatic bradycardia के लिए क्या देते हैं अपन adrenaline और bradycardia and atrial venous block, AV block, तो adrenaline plus AV atropine hypoglycemia के लिए अपन देते हैं, calcium के लिए calcium PSVT के लिए proximal supraventricular tachycardia adenosine, PSVT adenosine, ठीक है, BF4BT के लिए lidocaine plus SVP, BF4BT amiodarone plus SVP, ventricular fibrillation, ventricular tachycardia के लिए क्या देते हैं वैसे अपन lidocaine और pulseless BF4BT के लिए अपन क्या देते हैं pulseless BF4BT के लिए अपन देते हैं pulseless BF4BT amiodarone, PSVT के लिए adenosine, BF4BT के लिए lidocaine, pulseless BF4BT के लिए amiodarone, bipolar
disorder, lithium, hypertension disorder, lithium cyanide, renal dysfunction, pacemaker, hypertension, emergency, nitroglyceride, trigeminal, carbamazepine, hypertension, trigeminal, क्या देते हैं carbamazepine, venous encephalopathy, Purpura disease, thiamine. Side effect of drugs includes atorvastatin, muscle pain, asymmetric dry cough, atorvastatin, muscle pain, side effect of drugs includes atorvastatin, muscle pain, asymmetric dry cough, nitrofurantoin, pulmonary eosinophil. Atorvastatin, muscle pain, asymmetric dry cough, asymmetric dry cough, nitrofurantoin, pulmonary eosinophil, pulmonary eosinophil, asymmetric dry cough, atorvastatin, muscle pain, asymmetric dry cough, asymmetric dry cough, nitrofurantoin, pulmonary eosinophil, pulmonary eosinophil, atorvastatin, muscle pain, asymmetric dry cough, asymmetric dry cough, nitrofurantoin, pulmonary eosinophil, atorvastatin, muscle pain, atorvastatin, muscle pain, asymmetric dry cough, atorvastatin, muscle pain, asymmetric dry cough, nitrofurantoin, pulmonary eosinophil, pulmonary eosinophil, atorvastatin, muscle pain, asymmetric dry cough, nitrofurantoin, pulmonary eosinophil, warfarin, calcium, CKD patient, carbamazole, methimazole, agranulocytosis, cyclophosphamide, emerging cytosis, carbamazole, methimazole, agranulocytosis, carbimazole, methimazole, agranulocytosis, cyclophosphamide, emerging cystitis, immune for sensitivity, skin discoloration, and peripheral corticoids, steroid release myopathy, Daxonic anemia, stability, D4T, metabolic toxicities, cirrhosis, peripheral neuropathy, lipodystrophy. Atorvastatin is muscle pain, asymmetric dry cough, muscle pain, asymmetric dry cough, warfarin, CKD patient, carbamazole, methimazole, agranulocytosis, cyclophosphamide, right side heart failure, for pulmonary, left side heart failure, condition in the pulmonary circulation, condition in the pulmonary circulation is known as left side heart failure. Right side heart failure, condition in the systemic circulation, right side heart failure, condition in the systemic circulation, left side heart failure, condition in the pulmonary circulation, anorexia, nausea, weight gain, hepatomegaly, situs, distal neck pain, distal neck pain, चलो भैया पानी वानी लेकर आते हैं, तुम भी थोड़ी पानी वानी पी लो.
1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लिया करो, पानी वानी पी लिया करो, मूड एलिवेट हो जाता है। चलो आते हैं नहीं। So guys, I'm back. और भाई साहब जब पढ़ाई करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड भी कर लिया करो, अच्छा खाना खा के, क्लीन डाइट। दिस इज ड्रैगन फ्रूट, वेरी रिच इन फाइबर, वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, शुगर बहुत कम रहती है, इट डज नॉट एलिवेट योर ब्लड शुगर इतना ज़्यादा। हाँ बस थोड़ा सा बजट फ्रेंडली कम है। तो मुझे क्या, मैं तो अमीर हूँ नहीं भाई, अमीर नहीं हूँ मैं, महीने में 1 या 2 बार ड्रैगन फ्रूट खा पाता हूँ बस, क्योंकि 100 रुपये का एक आता है। I basically spend 80% of the income on myself, eating healthy, exercising on time, protein sources पे, sometimes I go out, और भाई मुझे नहीं पता लोग 3-3 घंटे बिना खाए कैसे बैठ जाते हैं, अपन नहीं बैठ सकते भैया, अपन को चाहिए फुल खाना हर 1 घंटे में। तुम भी कर सकते हो ऐसा, 1 घंटे का टारगेट सेट करो और कुछ बना लो अपने लिए। जैसे मैंने फ्रूट काट लिया, जिस दिन पैसे नहीं होते हैं उस दिन केला काट के उसके ऊपर काला नमक छिड़क लेता हूँ। यू गाइस कैन डू द सेम। अभी तो क्या ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं अपने, तो अपन जैसे तैसे चल रहे हैं, जिस दिन अपने भी हो गए बड़े इन्फ्लुएंसर तो थोड़ा तरीके से खाएंगे। बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने मेरा स्टडी सेशन हर बार ज्वाइन किया, या फिर अब ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने, जिनको पहली बार पता लगा।
आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. चलो फिर से 1 घंटे पढ़ते हैं और 1 घंटे बाद मिलेंगे. क्या टाइम हुआ अभी? इट्स 12:45. 1:45 पे सेकेंड इंट्रैक्शन होगा. चलो लेट्स सेट गो. अंडरस्टैंडिंग ये जो है वो बर्न की इंटेंसिटी बढ़ाता है. हैंड ग्रिप और स्वेटिंग क्या करते हैं? हैंड ग्रिप और स्वेटिंग क्या करता है? डिक्रीज कर देता है. ठीक है. फास्ट एसोसिएशन सर्कुलर माइग्रेटेड स्टैंडिंग इंक्रीजेस द बर्न एंड एसोसिएशन तो स्वेटिंग डिक्रीजेस एंड हैंड ग्रिप डिक्रीजेस एसोसिएशन इंक्रीजेस द एम्बिगुलर. ठीक है. Where does an increase the overload or digitalis and diuretics nitrate or beta agonist. तो अगर आप एचओसी तो diuretics digitalis diuretics nitrate और beta agonist. digitalis nitrate beta agonist और digitalis diuretics nitrate और beta agonist ये अवॉइड करेंगे. ट्रीटमेंट इज ABCD. अवॉइड ड्रग्स इज DNP एग्जाम यूनिक बीटा ब्लॉकर ABCD. बीटा ब्लॉकर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज मेटाबोलर एटेनॉल. बीटा एगोनिस्ट अवॉइड करेंगे. बीटा प्रोपेटिंग एटेनॉल प्रोपेनॉल एटेनॉल मेटाबोलर एटेनॉल और CGP इज टेंशन ब्लॉकर एटेनॉल और डाइसोपर्माइड इज क्लास 1 एंटी डाइसोपर्माइड. गलवार्डिन फैक्टर AS is the avoiding factor. AS होता है avoiding factor AS में amyl nitrate और sweating increase respiratory decrease fever people middle parts but say this is in some medical activity from this is an introduction to left ventricular obstruction due to systolic anticoagulation the family street and that supports the absent condition of HOCM. This has been ठीक है. तो HOCM and MVP बनना metal wall collapse बनना. Valsalva amyl nitrate and squatting. Valsalva amyl nitrate squatting they increase the HOCM and suppress the metal wall collapse murmur. ठीक है. स्क्वेटिंग क्या करती है? मेटल वॉल कोलैप्स एंड स्टैंडिंग. वल्सल्वा अमाइल नाइट्रेट स्टैंडिंग दे इंक्रीज द वल्सल्वा अमाइल नाइट्रेट इन स्टैंडिंग वल्सल्वा अमाइल नाइट्रेट इन स्टैंडिंग दे इंक्रीज द HOCM एंड MVP मर्मर. ठीक है. मेटल वॉल कोलैप्स मर्मर HOCM एंड MVP मर्मर. ठीक है. और स्क्वेटिंग और हैंड ग्रिप. स्क्वेटिंग क्या करती है? डिक्रीज कर देती है मर्मर और इसको दोनों को. और हैंड ग्रिप क्या करती है? डिक्रीज द HOCM मर्मर बट इंक्रीज द स्क्वेट डिक्रीज द MVP. अवॉइड ड्रग्स इन HOCM इज डिजिटालिस बीटा ब्लॉकर नाइट्रेट बीटा एगोनिस्ट.
ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्रोकर इज ब्रापेमिल और मेटाप्रोलोरेटिनोल दिए जाते हैं। गैल्वार्डिन इफेक्ट इज अमाइन नाइट्रेट एंड स्वेटिंग इंक्रीज द मर्मर रेस्ट मर्मर। गैल्वार्डिन इफेक्ट एसोसिएटेड विद स्वेटिंग। Galvadin effect is amyl nitrate and sweating increases the murmur, rest murmur decrease. Mitral valve prolapse is Barlow syndrome, floppy valve syndrome. Mitral valve prolapse is Barlow syndrome, floppy valve syndrome. Inheritance disorders dominant, usually asymptomatic. Same as HOCM. Murmur is mid-systolic murmur, vast increases, sweating decreases, hand grip increases. Very important for CNS. हैंड ग्रिप जो है वो एचओसीएम की मर्मर को तो डिक्रीज, हैंड ग्रिप और स्क्वेटिंग एचओसीएम की मर्मर को डिक्रीज कर देते हैं, बट स्क्वेटिंग तो डिक्रीज करता है एमवीपी मर्मर को, बट हैंड ग्रिप इंक्रीजेस द मर्मर ऑफ एमवीपी विच इज मिटरल वॉल प्रोलैप्स, बार्लो सिंड्रोम, फ्लॉपी वॉल सिंड्रोम. इसके अंदर मर्मर कौन सी आती है? मिड सिस्टोलिक मर्मर. मिटरल वॉल प्रोलैप्स के अंदर कौन सी लेफ्ट साइड में सी मिटरल वॉल, ठीक है. मिड सिस्टोलिक मर्मर. Investigational choices echo, ECG is normal in most of the cases. Which of the following murmurs increases with Valsalva? Valsalva के साथ मर्मर कौन सी इंक्रीज होगी? मेट्रो स्टेनोसिस, HOCM, मेटलिक वेजिटेशन, व्हाट इज स्टेनोसिस? अच्छा इंक्रीज HOCM. A young patient present with a systolic murmur at the apex. The murmur increases on both hand grip and Valsalva. Valsalva और hand grip दोनों पे इंक्रीज होने वाली मर्मर कौन सी होती है? बास तो दोनों के अंदर इंक्रीज कर ही रहा था, स्क्वेटिंग डिक्रीज कर रहा था, तो HOCM, और इसमें हैंड ग्रिप किसमें इंक्रीज कर रहा था? HOCM, MVP. Hand grip increases the murmur, the intensity of the murmur only MVP. Barlow syndrome, floppy wall syndrome. Right answer is most common cause of sudden cardiac death with this elevation, cough pattern, saddleback pattern in V1 and V2. Brugada syndrome. मेरा सबसे वीक क्वेश्चन CVS. मैं सोच रहा हूँ CVS जो है वो लास्ट में कर लूँगा. आधी किताब तो CVS की है, रिवाइज कर. अभी उससे मैम और कुछ पढ़ तो लेता ही हूँ एक बार, मैं दोबारा पढ़ लूँ. यार फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का. एक काम करते हैं ना, CVS एक बार के लिए CVS छोड़ देता हूँ. So less than 15 milligram per day, less than 15 milligram per day, less than 15 milligram per day, urine less than 300 milligram per day, and urine less than 15 milligram, urine less than 300 milligram per day, more than 3 liters of urine per day. Polyuria मतलब होता है more than 3 liters of urine. Microbial front for 30 से 300 मिलीग्राम. तो माइक्रोबियल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर यूरिन कलर इज नॉर्मल. नेफ्राइटिक सिंड्रोम में यूरिन कलर इज कोला कलर. आरबीसी यूरिन माइक्रोबायोलॉजी जो है नेफ्रोटिक के अंदर सिर्फ एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, और नेफ्राइटिक के अंदर आरबीसी यानी कि हेमाटूरिया को इंडिकेट करता है. बीपी इज नॉर्मल, बीपी इज hypertensive, BP is normotensive in nephrotic syndrome, and nephritic is hypertensive relapse occur in nephrotic and does not occur in nephritic. So patient coming with hematuria hypertension, it is nephritic. Renal biopsy, every line is question is renal biopsy. The renal biopsy is बहुत important है इन सभी डिजीज के लिए. It's time for diagnosis after blood examination. It's renal biopsy. यानी कि blood examination के बाद आप क्या करेंगे? renal biopsy ही करवाएंगे भाई. ठीक है. Very common nowadays because most common side effect is local side pain plus hematuria. Sometimes it is daycare procedure. Renal biopsy, it is very common nowadays because most common side effect is local side pain and hematuria. Sometimes it is daycare procedure होता है. Indication is unexplained CKD, chronic kidney disease है जिसको explanation ही नहीं है.
है ना, अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट किडनी इंजरी है, अनएक्सप्लेन्ड नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, persistent proteinuria, persistent हेमेटूरिया है, अनएक्सप्लेन्ड कुछ भी, किडनी ट्रांसप्लांट डिस्फंक्शन है, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी डिजीज विद रीनल इन्वॉल्वमेंट है, किडनी डिजीज विद रीनल इन्वॉल्वमेंट यानी कि SLE वेस्कुलाइटिस, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज स्मॉल शंकल किडनी, ऑलरेडी किडनी बहुत छोटी, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एक्टिव रीनल और पेरिनल इन्फेक्शन, अनकरेक्टेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन सॉलिटरी किडनी है, अकेली किडनी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रांसप्लांट, मॉर्बिड ओबेसिटी और सॉलिटरी किडनी कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेनल बायोप्सी, कॉमन कॉम्प्लिकेशन हेमेटूरिया हो सकता है, बोथ ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक, पेरेंट द बायोप्सी साइट, सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, पेरिनेल हेमाटोमा इन्फेक्शन, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, पेरिनेल हेमाटोमा और इन्फेक्शन, CKD stages according to GFR. CKD stage according to GFR is the normal GFR कितना होता है 1%, हाँ CKD stage according to GFR is कितनी स्टेज होती है 5, ग्रेटर देन 90, 60 to 89 और 30 to 59, 15 to 29 और लेस देन 15, एक बार फिर से 60 से 90, 60 से 90 नहीं, मोर देन 90, 60 to 89, 30 to 59 और 15 to 30 लेस देन 15, तो याद रखना मोर देन नंबर है एक, किडनी फंक्शन नॉर्मल, माइल्डली रिड्यूस, मॉडरेटली रिड्यूस, सिवियरली रिड्यूस एंड किडनी फेलियर. Nephrotic syndrome diagnosis characterized by the massive proteinuria greater than 3.5 per 1.73 meter square per 24 hours, per 1.73 meter square per 24 hours, per 1.73 meter square per 24 hours, hypoalbuminemia less than 3 gram per deciliter, peripheral edema, hypercoagulability, hyperlipidemia, microcytic anemia, recombinant erythropoietic therapy. Nephrotic syndrome का diagnosis is massive proteinuria greater than 3.5 milligram, greater than 3.5 gram per 24 hours in the area of 1.73 meter square. Hypoalbuminemia less than 3 gram per deciliter, तो less than 3 greater than 3.5 gram per 1.73 meter square in 24 hours, and albumin is less than 3 gram per deciliter. Per peripheral edema, hypercoagulability, peripheral edema present होती है, hypercoagulability, increased fibrinogen urine loss of 83, increased fibrinogen urine loss of antithrombin third, increased fibrinogen urine loss of antithrombin third, increased fibrinogen urine loss of antithrombin third. खाने वाली आंटी आगे बता कर आता हूँ उनको क्या बनाना है. हाँ हाँ आंटी. आवाज़ कम करने आया था, पढ़ाई करता हूँ आवाज़ कम करने.
secrecy permanent display nephrotic proteinuria hyperemia or peripheral edema hyperemia therapy. Myocytic anemia is the loss of the transferrin treatment choices. Therapy, massive proteinuria, hyperemia, hemophilia, massive proteinuria, hyperemia, peripheral edema, hypercoagulability, increased fibrinogen, weight loss of 83rd, increased fibrinogen. हाइपरकोएगुलेबिलिटी क्यों हो रही है नेफ्रोटिक के अंदर? क्योंकि फाइब्रोनोजन इंक्रीज हो रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा ना, यूरिनरी लॉस ऑफ 83rd हो रहा है, हाइपरलिपिडेमिया एंटीथ्रोम्बन थर्ड, hyperlipidemia, microcytic anemia, due to loss of the transferrin, microcytic anemia occurs, and treatment choices recommended in the protein therapy. Fibrinogen and lipoprotein is the only two parameter which increases. फाइब्रोनोजन और लाइपोप्रोटीन ऐसे दो पैरामीटर जो नेफ्रोटिक के अंदर इंक्रीज होते हैं, बाकी सब डिक्रीज हो रहा है. कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मिनिमम चेंजेस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, द फ्यूजन ऑफ द फूड प्रोसेस अकर्स इन द बायोप्सी. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मिनिमम चेंजेस इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस मिनिमम changes glomerulonephritis, membranous glomerulonephritis, membrane proliferative glomerulonephritis, post-streptococcal good patches syndrome. ठीक है, ये टेबल याद होनी चाहिए. मिनिमम चेंजेस glomerulonephritis is fusion of the food process, membrane glomerulonephritis, dormant spike like. Minimum changes is food process. Minimum changes fusion of the food process. Membrane glomerulonephritis is dormant spike. Minimum changes is fusion of the food process. Minimum changes glomerulonephritis, fusion of the food process. Minimum changes glomerulonephritis, fusion of the food process. Membrane glomerulonephritis is dormant spike like. Minimum changes glomerulonephritis is fusion of the food process. Membrane glomerulonephritis is membranous glomerulonephritis dormant spike. Minimum changes glomerulonephritis is fusion of the food process. Membranous glomerulonephritis is dormant spike pattern. Membranous proliferative is tram track appearance. Post-streptococcal is hump. Membranoproliferative is tram track appearance. Tram track. Membranoproliferative is tram track appearance, and post-streptococcal glomerulonephritis is hump. Good Pasture syndrome is linear deposit. Tram track appearance is post-streptococcal glomerulonephritis. एक सेकंड. Membranoproliferative glomerulonephritis is tram track. PSGN is hump. और गुड पैचेज सिंड्रोम इज स्टारिस का लीनियर डिपॉजिट्स. गुड पैचेज सिंड्रोम इज लीनियर डिपॉजिट. एचआईवी एसोसिएटेड विद एफएसजीएन कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अगर एचआईवी एसोसिएटेड होते हैं एफएसजीएन के साथ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ, तो देन इट इज कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. Few special points about minimal change glomerulonephritis is most common nephrotic syndrome in the children. C3 levels are normal. Absence of IgG deposit. C3 levels are normal in minimal change disease, and IgG is absent. Excellent prognosis, very good response to steroid. 3 findings very important about renal biopsy: light microscopic in the no abnormality, electron microscopic in the fusion of the food process, immunofluorescent में absence of the IgG deposit and complement deposit. Immunofluorescent के अंदर absence of IgG deposit and complement deposit, electron microscopy में fusion of the food process, and light microscopy में no abnormality. Very important table for you. Normal C3 is seen in IgG nephropathy, minimal changes, ANCA positive. Normal C3 is IgG nephropathy, minimal changes glomerulonephritis, ANCA positive. Minimal changes ANCA positive or IgG nephropathy. Normal C3 is IgG nephropathy, minimal changes or ANCA positive glomerulonephritis. Normal C3 is IgG nephropathy. Normal C3 is IgG nephropathy, minimal changes glomerulonephritis and minimal changes glomerulonephritis and ANCA positive. IgA, ANCA and minimal changes normal C3. Low C3 is post infective. PSGN हो गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, MPGN हो गया, लूपस नेफ्राइटिस हो गया. ठीक है, पोस्ट इन्फेक्टिव लूपस नेफ्राइटिस एंड MPGN. सीरम C3 लो इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि नॉर्मल बताना है किस में होता है, किस में होता है. मिनिमल चेन डिजीज में होता है, IgG नेफ्रोपैथी के अंदर होता है. टाइप्स ऑफ द कास्ट इन यूरिन इज WBC, pyelonephritis. WBC casts are present in pyelonephritis. WBC casts are present in the pyelonephritis. RBC cast is present in glomerulonephritis. Glomerulonephritis or immature. RBC cast immature is present in glomerulonephritis, vasculitis and malignant hypertension. Glomerulonephritis, vasculitis or malignant hypertension. Hyaline in low amount is present. Hyaline in low amount is normal. Hyaline अगर hyaline tissue अगर low, hyaline cast अगर low amount में, that is normal. Hyaline cast time also proteins. Pre-renal failure. Time also proteins is seen in pre-renal failure. Hyaline cast time also proteins. Pre-renal failure. Broad waxy cast CRF. Chronic renal failure. Dirty brown, muddy brown is acute tubular necrosis. Granular cast ATN or TIN, tubular interstitial nephritis or acute tubular necrosis. Hyaline casts are composed of tam-oswald protein, amicoprotein secreted by the renal tubular cells.
It is a mucoprotein यानी कि mucus plus protein secreted by the renal tubular cells. Imperial azotemia, hyaline cast become more prominent due to dehydration, concentrated urine due to dehydration and concentrated urine. Increased protein secretion in response to low renal perfusion. WBC cast are present in pyelonephritis, RBC or hematuria present in the GN nephritis, vasculitis or malignant hypertension. Hyaline in low amount, normal hyaline cast is present in perirenal failure due to dehydration and concentrated urine. Broad waxy is present in CRF. Dirty brown, muddy brown cast is present in acute tubular necrosis. Dirty brown or muddy brown is present in acute tubular necrosis. Dirty brown or muddy brown is present in acute tubular necrosis. Dirty brown or muddy brown present in acute tubular necrosis. Renal cast is TIN, tubular interstitial nephritis or acute tubular necrosis. Hyaline cast are composed of thymosyl proteins. Hyaline cast are composed of thymosyl proteins. Increased protein secretion in response to low renal perfusion. Increased protein secretion in response to low renal perfusion. Increased protein secretion in response to low renal perfusion. Tubular disease, prerenal failure, acute blood loss, tubular disease, prerenal failure and acute tubular necrosis. Prerenal failure causes hypoperfusion, acute blood loss, renal artery stenosis or CCF. Hypoperfusion, acute blood loss, renal artery stenosis and CCF. ATN, acute tubular necrosis, यहाँ पर greater than 20, urine sodium less than 20. Greater than 20, less than 20, prerenal failure, greater than 20, GFR की बात हो रही है. Acute tubular necrosis के अंदर prerenal failure में GFR greater than 20 और acute tubular necrosis में less than 20, urine sodium less than 20, greater than 20, fractional excretion of sodium less than 1%, fractional excretion of sodium greater than 2%, और urine osmolarity greater than 450, less than 450, hyaline cast is present, dirty brown or renal cast is present in ATN. RTA is renal tubular acidosis, type 4 is the most common. Renal tubular acidosis type 4 is the most common. जिसमें hyperkalemia नहीं होता. Hypokalemia is present in type 1 and type 2. Hyperkalemia is present in type 4. Hypokalemia is present in type 1 and type 2. Hyperkalemia is present in type 4. Type 1 RTA is distal convoluted tubule. Distal CT, proximal CT is type 2 RTA. Distal CT is type 1, proximal CT is type 2. And decreased aldosterone secretion is type 4. Primary defect क्या होता है? Distal convoluted tubule, distal convoluted tubule is type 1 and proximal convoluted tubule is present and affected in type 2. Type 4 RTA is decreased aldosterone secretion, acid excretion defect. Type 1 RTA, type 2 RTA, bicarbonate absorption defect. Hyperkalemia, decreased aldosterone secretion, acid excretion defect, bicarbonate absorption defect and decreased aldosterone secretion, acid excretion defect. Distal CT is acid excretion defect, acid excretion defect क्योंकि DCD एसिड एक्सक्रीशन डिफेक्ट का मतलब क्या है कि H+ बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है. बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इज प्रॉक्सिमल सीटी से बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल सीटी में बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट आ गया. यूरिनरी पीएच इज ग्रेटर देन 5.5 और यहाँ पर ग्रेटर देन 4.5 भी हो सकता है और लेस देन 5.5 भी हो सकता है. यहाँ पर श्योरली लेस देन 5.5 होगा. स्पेशल पॉइंट इज रीनल स्टोन प्रेजेंट. नो रीनल स्टोन. यूरिन आयन गैप इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. Type 1 has urine anion gap is positive. The urine anion gap of type 2 is negative and type 4 is also positive. Fanconi syndrome, yes, it is present in type 2. Excrete GAP, glucose, amino acid and phosphate. Type 1 first alphabet is A and add करना तो positive feeling more pH. Type 2 is bicarbonate, second alphabet. ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को. बार्टर गिटल लीडल. Bartter syndrome, it looks like furosemide. Gittelman syndrome, it looks thiazide and it looks like pseudo hyperaldosterone. Bartter syndrome, Gittelman syndrome, Liddle syndrome. Bartter syndrome is furosemide, Gittelman syndrome is thiazide and Liddle syndrome is pseudo hyperaldosterone. Bartter syndrome is furosemide, Gittelman syndrome is thiazide, Liddle syndrome is pseudo hyperaldosterone. Bartter is furosemide, Gittelman is thiazide, Liddle syndrome is like pseudo hyperaldosterone. Bartter is furosemide, Bartter, Gittelman and Liddle. Bartter, Gittelman and Liddle. Bartter syndrome is thiazide.
Bartter syndrome, Gitelman syndrome, Liddle syndrome. Bartter syndrome is furosemide, Gitelman syndrome is thyroid, and Liddle syndrome is like pseudo hyperaldosterone. Furosemide inhibitory effect of the sodium potassium plus 2 chloride channel, sodium potassium and 2 chloride channel, sodium potassium and inhibitory defect of sodium potassium and sodium potassium plus 2 chloride channel. Gitelman is inhibitory defect of sodium chloride. Liddle syndrome is the stimulatory effect of ENaC. Increased sodium reabsorption in distal nephron. इसी वजह से ऐसा लगता है कि एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ है. ठीक है, तो बार्टर सिंड्रोम furosemide looks like furosemide and it looks like thiazide. It looks like thiazide and it looks like pseudo hyperaldosterone. Furosemide sodium potassium 2 chloride channel, sodium potassium sodium chloride channel, and इसके अंदर increase absorption आ जाता है सोडियम का. Stimulatory effect of ENaC. Sodium potassium 2 chloride, sodium chloride and ENaC. Site as thick ascending loop of Henle, thick ascending loop of Henle, DCT and distal nephron. Bartter Gitelman or Liddle syndrome. Thick ascending loop of Henle, thick ascending loop of Henle और DCT और distal nephron. Hypokalemic acidosis क्यों? क्योंकि पोटेशियम कम हो गया ना. Hypokalemic acidosis, hypokalemic alkalosis. तो बार्टर गिटलमैन और लिडल तीनों के अंदर क्या हो रहा है? हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस हो रहा है. रास इज एलिवेटेड एंड लो. रास इज लो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि सोडियम तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो ही रहा है. तो हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस और एलिवेटेड रास. MCQs. Hypercalciuria, renal stone is present. Hypercalciuria and hypomagnesemia is present. Hypercalciuria, renal stone is present. Hypercalciuria क्योंकि वो citric से कर जाएगा. Hypocalciuria and hypomagnesemia. Hypercalciuria and hypomagnesemia and hypertension. निमोनिक क्या हो गया इसके? FB furosemide and Bartter, Game of Thrones, Gitelman and thiazide. तो FB GOT and pseudo hyperaldosteronism. So basically, Bartter look like furosemide and thiazide look like Gitelman and Liddle pseudo hyperaldosteronism. Furosemide loop lose calcium, hypercalciuria. ठीक है, loop loses calcium, बिल्कुल सही बात है. Thiazide is hypocalciuria, hypomagnesemia. Liddle present with hypertension, pseudo hyperaldosteronism. Management of Liddle is amidoride, inhibit the ENaC. Management of Liddle is ENaC inhibitor होगा. और most of the question come from Liddle because it's stimulatory effect of ENaC और hypertension with low RAS. पहली बार हो रहा है कि हाइपरटेंशन भी और लो RAS भी है, जबकि रेनिल सिस्टम ये बड़ा हुआ होता है. ठीक है. डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर इज एल्सकेरिन. ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जिसके अंदर RAS लो है और फिर भी हाइपरटेंशन प्रेजेंट है? दैट इज लीडल सिंड्रोम. इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ENaC. Report syndrome is X-linked recessive, male affected mole. X-linked recessive इसलिए male are affected. More triad is hematuria, sensory neural deafness and cataract. Cataract कैसे? Anterior lenticonus is present. 20-year-old male person with sufficiency initially with episodes of painless hematuria, and he also has progressive deafness. He progressive is muscular illness क्योंकि autosomal ये recessive है. What is the most likely report syndrome? Male in the question and his brother also have same plus painless hematuria, deafness और cataract. खत्म. Crest syndrome, limited systemic sclerosis. Crest syndrome, limited systemic sclerosis, LSS, limited systemic sclerosis, Crest syndrome. Calcinosis, Raynaud syndrome, esophageal dysmotility, esophageal dysmotility, sclerotactyly, and telangiectasia. Inoxaparin, purpura, palpebral purpura or extensive surface plus normal platelets plus increased IgA. Direct MCQs are inoxaparin, purpura, palpebral purpura or extensive surface plus normal platelets, palpebral purpura over extensive surface plus normal platelets, palpebral purpura over the extensive surface plus normal platelets plus increased IgA, palpebral purpura plus normal palpebral purpura over the extensive surface plus normal platelets plus increased IgA. Inoxaparin purpura is palpebral purpura over the extensive surface, increased platelets plus increased IgA. Platelets plus increased IgA. IgA nephropathy is increased IgA. Hematuria within 7 days of upper respiratory tract infection. Increased IgA. Hematuria within 7 days of upper respiratory tract infection. PSG and hematuria after 10 days of upper respiratory tract infection. Hematuria after 7 days within 7 days of upper respiratory tract infection. IgA nephropathy. PSG after 10 days. HUS ATM. ATM क्या था यार? एक्यूटोमेटिक फीवर, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ATM प्लस फीवर प्लस सीरियस इन्वॉल्वमेंट इज TTP. HUS ये दोनों क्या है? वेस्कुलर हेमोलिसिस है. ठीक है. HUS और TTP कौन सा हेमोलिसिस है? एक्स्ट्रा वेस्कुलर. HUS ATM TTP ATM प्लस फीवर प्लस CNS involvement. Wegener is 2H hemoptysis, cavity in the lungs, 2H hemoptysis and hematuria. Good passage disease or pulmonary syndrome is a delayed autoimmune syndrome present as
RPGN. Good Pasture syndrome or pulmonary syndrome is equals to, it is rare autoimmune disease presented as RPGN, rare autoimmune disease presented as RPGN. गुड पास्चर सिंड्रोम डिजीज वेगनर्स के अंदर हिमेटूरिया और हिमेप्टिसिस दोनों प्रेजेंट होते हैं. टीटीबी एटीएम प्लस पीओ प्लस 6 इन्वॉल्वमेंट. एचयूएस इज एटीएम पीएचजी एंड हिमेटूरिया आफ्टर 10 days of upper respiratory tract infection. IgA nephropathy increase IgA hematurial within 7 days of upper respiratory tract infection. SSB increase IgA and extension service non-related. Hemoptysis plus hemoptysia plus anti-GBM global basement antibodies. Change of type of collagen lung plus renal. Attack both pulmonary and glomerular capillaries. Rapidly progressive glomerulonephritis. देखो गुड पास्चर डिजीज़ है ना, या फिर पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. हिमोप्टिसिस प्रेजेंट होता है, हिमेटूरिया प्रेजेंट होता है, एंटीजीबीएम एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है विच अटैक पल्मोनरी एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ रहा है. पल्मोनरी सिस्टम और रीनल फंक्शन दोनों अफेक्ट हो रहा है. पोर्ट सिंड्रोम इज एक्सट्रीम रिसेसिव मेल अफेक्टेड मोर हिमेटूरिया सेंसरी मेल डेफनेस एंड ट्रैक एंटीरियर एंटीकॉलिसिस प्रेजेंट 3 days after an attack, so it must be IgA nephropathy. And within 7 days IgA nephropathy, but within 10 days post-apical glomerulonephritis. Recurrent hematuria is present in IgA nephropathy. एक अगर कोई हेमेटूरिया डेवलप होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ हेमेटूरिया डेवलप हो रहा है विदिन 7 days, तो इट इज IgA nephropathy. विदिन 10 days then it is PSGN. ठीक है, तो recurrent hematuria is present in IgA nephropathy. C3 level is normal, ASO titer is normal. Recurrent hematuria C3 level is normal, ASO titer is normal. Recurrent hematuria C3 level normal, ASO titer normal. और पोस्ट एपिकोकल में रेयर रेकरेंस होती है. C3 low ASO titer is also elevated. ASO titer is anti-cetolizin, सुना नहीं, ASO titer is also elevated. C3 low ASO titer elevated. IG increase in IgA nephropathy plus inositol purpura, most common vasculitis in children in inositol purpura, most common glomerular disease in children in IgA nephropathy. Most common glomerular disease in children is IgA nephropathy. Most common nephritic syndrome in the children with changes. Most common vasculitis in children in HSP. Most common vasculitis in the children in HSP. Most common vasculitis in children in HSP. Most common vasculitis in the children in HSP. Most common glomerular disease in the children is IgA nephropathy. Most common vasculitis in children is HSP. Most common vasculitis in the children is HSP. Most common glomerular disease in the children is IgA nephropathy. Most common nephrotic syndrome in the children is minimal changes. Most common vasculitis is most common vasculitis is HSP, noxious purpura. Most common glomerular disease is nephropathy. Most common nephrotic syndrome is minimal changes. ठीक है, तो glomerular disease IgA nephropathy, nephrotic syndrome is minimal changes. Recurrent glomerular disease in IgA nephropathy and port syndrome, AK versus CK, CMD and USG. Characteristic disorder autoantibodies are antinuclear antibodies, SLE, most sensitive, anti-Smith, double-stranded DNA, SLE, anti-nuclear, anti-Smith, anti-cardiolipin. What are the autoantibodies present in the connective tissue disorders? Anti-nuclear, anti-Smith, anti-double-stranded DNA, anti-cardiolipin, anti-nuclear, anti-Smith, anti-double-stranded DNA, anti-cardiolipin, anti-stone, anti-nuclear, anti-Smith, anti-cardiolipin, anti-double-stranded DNA, anti-histone, anti-human RNP, or rheumatoid factor, anti-CCP, anti-ROSSA, anti-LA-SSB, anti-ROSSA, anti-LA-SSB, anti-ROSSA, anti-LA-SSB, anti-SCL70, anti-DNA topoisomerase, anti-centromere, anti-SRP, anti-MI2, anti-JOV1, or P-ANCA, MPO. Autoantibodies or C-ANCA, proteinase 3, C is 3 alphabets. C-ANCA is proteinase 3, C is 3 alphabets. Histidine tRNA synthetase, anti-mitochondrial antibody, histidine tRNA synthetase or anti-mitochondrial antibody. Histidine tRNA synthetase, 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 anti-mitochondrial antibody.
History tRNA synthesis, antimicrobial, antimitochondrial antibody, antinuclear antibody is antinuclear antibody, SLE most sensitive, anti-Smith antibody is SLE most specific. Most sensitive is antinuclear, anti-Smith is most specific. Antinuclear is antinuclear antibody is SLE is most sensitive, anti-Smith is most specific. Antinuclear antibody is SLE, anti-sensitive, most sensitive. Antinuclear antibody is SLE most sensitive. Anti-Smith is most specific. Antinuclear is anti-sensitive. Antinuclear is most sensitive. Anti-Smith is most specific. Antinuclear is most sensitive. Antinuclear is most sensitive. Anti-Smith is most specific. Antinuclear is SLE is most sensitive. Anti-Smith is most specific. Antinuclear is most sensitive. Anti-Smith is most specific. Anticardiolipin, lupus anticoagulant, anti-beta-2 glycoprotein 1 antibody. Anticardiolipin, lupus anticoagulant, anti-beta-2 glycoprotein 1 antibody. Anticardiolipin, lupus anticoagulant, anti-beta-2 glycoprotein 1 antibody. आ रहा हूँ यार पानी वानी लेके. Antinuclear antibody is most sensitive. Anti-Smith antibody, antinuclear antibody, anti-Smith antibody, antinuclear antibody, SLE most sensitive. Anti-Smith antibody, antinuclear antibody, anti-Smith antibody, antinuclear antibody, anti-Smith antibody, antinuclear antibody, SLE most sensitive. Anti-Smith antibody is SLE most specific. Antinuclear antibody is most sensitive. Anti-Smith antibody is most specific. SLE के लिए most specific. Anti-nuclear antibody, anti-Smith antibody. Anti-Smith is most specific. Anti-nuclear is most sensitive for SLE. Anticardiolipin, lupus anticoagulant, and anti-beta-2 glycoprotein 1 antibodies. Anticardiolipin, lupus anticoagulant, and anticardiolipin, anti-lupus anticoagulant, anti-beta-2 glycoprotein 1 antibody. Anticardiolipin, anti-beta-2 glycoprotein, and lupus anticoagulant, Epler syndrome, antiphospholipid antibody syndrome. Anti-stone is drug-induced lupus. Anti-stone is present in drug-induced lupus. Anti-U1-RNP misconnected tissue disease. Anti-U1-RNP. Anti-U1-RNP replication misconnected tissue disease. Rheumatoid factor, anti-CCP, rheumatoid arthritis. Rheumatoid factor, anti-CCP. Rheumatoid factor, anti-CCP is rheumatoid arthritis. Anti-CCP, anti-CCP, rheumatoid factor, anti-CCP, rheumatoid factor, anti-CCP, rheumatoid arthritis. Anti-Rho SSA, anti-La SSB, Sjogren syndrome. Anti-Rho SSA, anti-La SSB, Sjogren syndrome. Anti-Rho SSA, anti-La SSB, Sjogren syndrome. Anti-SCL70 is diffuse scleroderma. Anti-SCL70 is anti-SCL70 diffuse scleroderma. Anti-Rho SSA is anti-La SSB. Anti-Rho SSA and anti-La SSB is Sjogren syndrome. Anti-Rho SSA and anti-La SSB is Sjogren syndrome. Anti-SCL70 is diffuse scleroderma. Anti-centromere is Crest syndrome. Anti-centromere is Crest syndrome. Anti-SRP is diffuse scleroderma. Anti-Rho SSA, anti-La SSB, Sjogren syndrome. Anti-Rho SSA, anti-La SSB, Sjogren syndrome, diffuse scleroderma. Anti-SCL70 to isomerase. Anti-centromere is Crest syndrome is Kelsey. Calcinosis, Reynolds syndrome, physical motility, scleroderma, telangiectasia. Anti-SRP, polymyositis, dermatomyositis, anti-SRP, anti-MI2, anti-JOB1, anti-SRP, anti-MI2, anti-JOB1, PMK, MPO, myeloperoxidase, Churg-Strauss syndrome, microscopic pharyngitis, Churg-Strauss syndrome, microscopic pharyngitis, PMK, MPO, recent GN ulcerative colitis. Churg-Strauss syndrome, microscopic pharyngitis, Churg-Strauss syndrome, microscopic pharyngitis, crescent glomerulonephritis, ulcerative colitis. PMK is myeloperoxidase. PMK or MPO is Churg-Strauss syndrome, microscopic pharyngitis, Churg-Strauss, microscopic pharyngitis, crescent glomerulonephritis, ulcerative colitis, crescent glomerulonephritis, ulcerative colitis, microscopic pharyngitis. PMK is proteinase 3C is 3 alphabet. Wegener's granulomatosis. Stridile tRNA synthesis is inflammatory myopathy. Stridile tRNA synthesis is inflammatory myopathy. और antimitochondrial antibody primary biliary cirrhosis. SLE characterized by non-erosive arthritis. SLE is characterized by shrinking lung syndrome.
SLE characterized by non-erosive arthritis. SLE is characterized by non-erosive arthritis. SLE is characterized by shrinking lung syndrome. Antiphospholipid syndrome is characterized by recurrent thrombotic events. Thrombocytopenia, recurrent spontaneous abortions, IUD, PIS, placebo abortion, जो चीज़ बहुत सारे भाई कितना सारा बच्चा है यार. Questions? टफ पार्ट आ गया. Antiphospholipid syndrome. Antiphospholipid syndrome is characterized by recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent spontaneous abortion, recurrent thrombotic event, thrombocytic anemia, recurrent thrombotic event, thrombocytic anemia, thrombocytopenia, recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent spontaneous abortion, recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent abortion, recurrent spontaneous abortion, IVF, pregnancy with hypertension, placental abruption, organ choices occurring. Recurrent thrombotic events. Antiphospholipid syndrome is Antiphospholipid syndrome is that recurrent spontaneous abortion, recurrent thrombotic events, thrombocytopenia, recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent spontaneous abortion, recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent spontaneous abortion, recurrent thrombotic event, thrombocytopenia, recurrent spontaneous abortion, IUD, PIS, placebo abortion, antiphospholipid syndrome is characterized by Sarcoidosis and non-cagating granuloma plus bilateral non-cagating granuloma plus bilateral non-cagating granuloma plus bilateral hilar lymphadenopathy. No cavities present unlike TB, carcinoma lung, histoplasmosis, Wegener's, that is his TCL cavity. TB, carcinoma lung, histoplasmosis, TB, carcinoma lung, histoplasmosis और Wegener's. ठीक है. तो नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमा, नो कैविटी फॉर्मेशन प्लस बायलेटरल हेलार लिम्फेडिनोपैथी. सर्कोइडोसिस एसोसिएटेड विद स्कैरिंग एलोपेशिया. स्कैरिंग एलोपेशिया के साथ कौन एसोसिएटेड होता है? सर्कोइडोसिस. स्मोकिंग इज नॉट रिस्पेक्टेड फॉर सर्कोइडोसिस. अपर लो फाइब्रोसिस द की टू सॉल्व एमसीक्यूज. अपर लो फाइब्रोसिस प्रेजेंट होती है, दैट इज इंक्लूजन बॉडी एसोसिएटेड विद सर्कोइडोसिस. अपर लो फाइब्रोसिस इज प्रेजेंट, इंक्लूजन बॉडी एसोसिएटेड विद सर्कोइडोसिस. इंक्लूजन बॉडी एसोसिएटेड विद सर्कोइडोसिस. शोमन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी होती है? शोमन, एस्ट्रॉइड, रेजिडुअल. Schumann, asteroid or residual. Loeffler syndrome is infection due to Ascaris, and sarcoidosis is a type of connective tissue disorder. Two syndromes associated with sarcoidosis is Loeffler syndrome is infection due to Ascariasis. ठीक है. Loeffler syndrome is infection due to Ascariasis. Two syndromes associated with sarcoidosis is Loeffler syndrome. Loeffler syndrome is infection due to Ascariasis. Loeffler syndrome is Loeffler syndrome. Lofgren syndrome, arthritis nodosum adenopathy. UV parotid fever is UV parotitis. Hereford syndrome. UV parotitis. Hereford syndrome. Fever, bilateral carotid enlargement, uveitis, anterior facial palsy. Fever, bilateral carotid uveitis, facial palsy. Fever, bilateral carotid uveitis, facial palsy. Fever, bilateral carotid fasciitis. Fever, bilateral carotid uveitis. Fever, bilateral carotid uveitis और facial palsy. Facial palsy diagnosis is asimilar. अच्छा. Two syndrome associated with sarcoidosis is Lofgren syndrome और Hereford syndrome या UV parotid fever. देखिए Loeffler syndrome associated with Ascaris infection और Lofgren syndrome UV parotid fever और UV parotitis, Hereford syndrome और UV parotid fever. Fever, parotid involvement, uveitis, facial palsy.
ACE in the blood. X-ray bilateral hilar adenopathy, axial calcification, bronchial lavage, high CD4 CD8 ratio, gallium 67 scan diagnosis is ACE in the blood. X-ray के अंदर bilateral adenopathy, lymphadenopathy, bilateral hilar adenopathy, axial calcification, bronchial lavage के अंदर high CD4 CD8 ratio, gallium 67 scan test is given. Slitsback test, given Slitsback test, Redman nodosum. Biopsy is confirming non-casuating granuloma. Granulomatous vasculitis versus non-granulomatous vasculitis. Granular vasculitis, non-granular vasculitis. Granulomatous vasculitis is giant cell arteritis, Takayasu arteritis, vaginal granulomatosis, Chuck-Strauss syndrome. Granulomatous vasculitis, giant cell temporal arteritis, Takayasu arteritis, vaginal granulomatosis or Chuck-Strauss syndrome. Granulomatous vasculitis, non-granulomatous vasculitis, granulomatous vasculitis, giant cell arteritis, Takayasu arteritis, vaginal granulomatosis or Chuck-Strauss syndrome. Giant cell arteritis, Takayasu arteritis, vaginal granulomatosis, giant cell arteritis, Takayasu arteritis or vaginal granulomatosis, non-granulomatous vasculitis, polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, microscopic cholangitis, inoxaline purpura, essential cryoglobulinemic vasculitis, cutaneous leukocytoclastic angiitis. Granulomatous vasculitis, non-granulomatous vasculitis, granulomatous is giant cell arteritis, Takayasu arteritis, granulomatous vasculitis, non-granulomatous vasculitis. Granulomatous मतलब granular formation होगा. Giant cell arteritis, Takayasu arteritis, vaginal granulomatosis, giant cell Takayasu, vaginal or Chuck-Strauss. Non-granulomatous is polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, microscopic cholangitis, polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, microscopic cholangitis, polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, microscopic cholangitis, polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, microscopic cholangitis, polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, microscopic cholangitis, inoxaline purpura, essential cryoglobulinemic vasculitis, cutaneous leukocytoclastic angiitis. Classification of vasculitis is large vessel, medium vessel, small vessel. Large vessel, medium vessel or small vessel. Small vessel is ANCA positive and ANCA negative. Or large vessel is temporal arteritis, Takayasu arteritis. Temporal arteritis or Takayasu arteritis. Medium vessel is polyarteritis or Kawasaki arteritis. Polyarteritis or Kawasaki arteritis. पढ़ी दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो. Granulomatous is giant cell arteritis, Chuck-Strauss syndrome, vaginal granulomatosis or Takayasu arteritis. Non-granulomatous is Kawasaki, microscopic or inoxaline, essential cryoglobulinemic vasculitis, cutaneous leukocytoclastic angiitis. Cutaneous leukocytoclastic angiitis, essential cryoglobulinemic vasculitis is inoxaline purpura, microscopic cholangitis, Kawasaki disease, polyarteritis nodosa. Polyarteritis nodosa, Kawasaki disease, microscopic cholangitis, inoxaline purpura, essential cryoglobulinemic vasculitis, cutaneous leukocytoclastic angiitis. Classification is ESR increase in all vasculitis. Large vessel is temporal or Takayasu और medium vessel is Kawasaki और polyarteritis. Medium vessel कौन सी होती है? Kawasaki और polyarteritis. Giant cell Takayasu और temporal arteritis, these are large vessel. Small vessel is ANCA positive, ANCA negative. ANCA positive is Wegener's, microscopic, Chuck-Strauss, Renal limited और presenting glomerulonephritis. ठीक है. और सी ANCA is ANCA positive, ANCA negative. ANCA positive is Wegener's, WMCRC. Wegener's microscopic Chuck-Strauss, Renal limited, Wegener's microscopic Chuck-Strauss, Renal limited and crescentic. Wegener's microscopic Chuck-Strauss, और Renal limited और crescentic glomerulonephritis. CN का पॉजिटिव और PN का प्रीडोमिनेंट. CN का प्रीडोमिनेंट इज Wegener's, बाकी सारी PN का होती है. ANCA नेगेटिव इज inoxaline, essential cryoglobulinemic vasculitis और Behcet syndrome. Temporal arteritis is giant cell arteritis. एक बार फिर से पढ़ लोगे इसे. Let's read it again. Granulomatous की कौन सी होती है? एक तो तेरी giant cell होती है, एक तेरी Wegener's होती है, एक तेरी temporal होती है, नहीं Takayasu होती है और Wegener's, granulomatous, Takayasu और Chuck-Strauss. Wegener's, granulomatous, Takayasu और Chuck-Strauss. Wegener's granulomatosis, ये तो है ही सही. Granulomatous, Takayasu, giant cell और Chuck-Strauss. Takayasu, giant cell और Chuck-Strauss. बाकी सारे नॉन ग्रेनुलोमेटस है, चाहे वो क्यूटेनियस ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक हो, एसेंशियल क्रायोग्लोबुलिनेमिक आर्टराइटिस हो, इनॉक्सटॉलिन हो, माइक्रोस्कोपिक हो, Kawasaki हो, polyarteritis nodosa हो. Classification of vasculitis is ESR increase in all vasculitis.
ठीक है। क्लासिफिकेशन वस्कुलाइटिस लार्ज वेसल, मीडियम वेसल, स्मॉल वेसल। लार्ज वेसल के अंदर टेम्पोरल ओटाकायासु, टेम्पोरल आर्टराइटिस, ओटाकायासु आर्टराइटिस। मीडियम वेसल इज पोलीआर्टराइटिस नोडोसा और कावासाकी आर्टराइटिस। मीडियम वेसल इज पोलीआर्टराइटिस नोडोसा और कावासाकी आर्टराइटिस, पोलीआर्टराइटिस नोडोसा और कावासाकी आर्टराइटिस। टेम्पोरल ओटाकायासु जाइंट सेल। स्मॉल वेसल इज एंका पॉजिटिव, एंका नेगेटिव। एंका पॉजिटिव इज microscopic jerk straws, Wegener's, renal cell, or presentic. Anca predominant is Wegener's. Anca negative is Nock, essential, or Paget. Temporal arteritis, giant cell arteritis. कितना टाइम हो गया भैया? कावासाकी डिजीज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है. इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज. एज चिल्ड्रन 3 months to 5 years. कैरेक्टराइज बाय यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, जिसको आप कंफ्यूज कर सकते हो पेरिटाइटिस के साथ, सियालिडिनाइटिस के साथ. बायलेटरल नॉन एक्सुडेटिव यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, बायलेटरल नॉन एक्सुडेटिव कंजक्टिवाइटिस, यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी और बायलेटरल नॉन एक्सुडेटिव कंजक्टिवाइटिस, बायलेटरल नॉन एक्सुडेटिव कंजक्टिवाइटिस, यूनिलेटरल लिम्फेडिनोपैथी, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग, पेरीउंगल पीलिंग ऑफ द स्किन, पेरीउंगल पीलिंग ऑफ द स्किन, स्किन से निकलती है. पॉलीमॉर्फस रैश, थ्रोम्बोसाइटोसिस, पॉलीमॉर्फस रैश, थ्रोम्बोसाइटोसिस. Treatment is IVIG plus aspirin. New drug is ulinastatin. Complication coronary artery aneurysm in 25% of the untreated patients. Coronary artery aneurysm. IVIG given in Kawasaki, GB syndrome, or dermatomyositis. Cianca predominant is Wegener's. Cianca predominant is Wegener granulomatosis meningitis. Patient present with upper respiratory, lower respiratory, kidney vasculitis. Olfactory hemoptysis, multiple cavity in the lungs, strawberry gum, purpura, rituximab, cyclophosphamide. एक बार फिर से Cianca predominant is Wegener granulomatosis with meningitis. Wegener's granulomatosis with meningitis, यानी कि कैविटी फॉर्मेशन होगा. एंजाइटिस मतलब वेसल्स अफेक्टेड होंगे, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी वेस्कुलाइटिस. जो क्रिसेंटिकुलर नेफ्राइटिस प्रेजेंट होता है इसके अंदर. हेमेटूरिया हेमोप्टाइसिस, मल्टीपल कैविटी, स्ट्रॉबेरी गम, पल्पीरा. ट्रीटमेंट इज रिटुक्सिमाब. पॉलीआर्टराइटिस, नोडोसा, टेम्पोरल आर्टराइटिस. टेम्पोरल आर्टराइटिस, जाइंट सेल आर्टराइटिस, कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पर. दैट इज द लार्ज ब्रांच, टेम्पोरल ब्रांच which is the large artery. Carotid artery involvement, temporal branch, carotid artery involvement, carotid artery involvement, temporal branch, large artery. Most common presenting feature is temporal headache. Carotid artery involvement, temporal branch, large artery. Most common presenting feature is temporal headache. jaw pain increased by chewing or talking with visual blindness. jaw pain increased by chewing or talking जब temporal arteritis होता है तो, यानी कि चबाने में और बोलने में दिक्कत होती है. विजुअल ब्लाइंडनेस यानी कि डिप्लोपिया इज प्रेजेंट, टेम्पोरल हेडेक इज प्रेजेंट, स्कैल्प टेंडरनेस इज प्रेजेंट, हाथ लगाते ही दर्द होता है स्कैल्प के ऊपर, थिक कॉर्ड लाइक टेम्पोरल आर्टरी, वेट लॉस इज देयर, एलिवेटेड ईएसआर, आई डिप्लोपिया, ब्लाइंडनेस, पोलीमैल्जिया रूमेटिका, टेम्पोरल हेडेक, निमोनिक है इसका, स्वेप्ट, स्कैल्प टेंडरनेस ड्यू टू थिक कॉर्ड लाइक टेम्पोरल आर्टरी, स्कैल्प टेंडरनेस, वेट लॉस, एलिवेटेड ईएसआर. कुछ सोचना, इन्फ्लेमेशन है तो ईएसआर एलिवेटेड होगा, वेट लॉस होगा, कुछ चबा नहीं पाएगा तो खाना नहीं जाएगा अंदर. आई डिप्लोपिया क्योंकि विजुअल ब्लाइंडनेस प्रेजेंट है. पोलीमैल्जिया रूमेटिका, हाथ पैरों में दर्द होगा, पोलीमैल्जिया रूमेटिका. टेम्पोरल हेडेक, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर इज टेम्पोरल हेडेक, यहाँ से दर्द होता है मैनी टाइम्स. डायग्नोसिस, टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी की जाती है, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड. अगर कोई बायोप्सी तो करवाएगा नहीं. ट्रीटमेंट इज स्टेरॉइड, वेरी गुड रिस्पॉन्स विद इन 72 आवर्स. टाकायासु आर्टराइटिस इज पल्सलेस डिजीज. पल्सलेस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन वेसल है वो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी अफेक्टेड होती है, तो आर्म क्लोडिकेशन होता है. क्लोडिकेशन क्या होता है? मसल पेन ड्यू टू इस्कीमिया. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पल्सलेस डिजीज. टाकायासु आर्टराइटिस, पल्सलेस डिजीज, आर्म क्लोडिकेशन, अनइक्वल बीपी इन द आर्म इज प्रेजेंट, रेडियो-रेडियल डिले इज प्रेजेंट, रेडियोवास्कुलर हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट. आर्म क्लोडिकेशन, अनइक्वल बीपी, रेडियो-रेडियल डिले और रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन. पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा. एज क्या होती है इसके अंदर? 40 से 50 साल. नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस लीड्स टू डिजिटल गैंग्रीन. अच्छा, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा 40 से 50 साल का आदमी जिसके अंदर नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस हो गया है, वेसल्स का नेक्रोसिस हो गया है, जिसके कारण गैंग्रीन डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल गैंग्रीन.
डिजिटल गैंग्रीन मतलब उंगलियों के ऊपर, एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी, मोनोनेराइटिस मल्टीप्लेक्स, रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन विदाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, विदाउट आरबीसी कास्ट। क्या क्या चीज़ हो गई? हेपेटाइटिस बी, मोनोनेराइटिस मल्टीप्लेक्स, मुझे नहीं पता क्या होता है, न्यूराइटिस समथिंग रिलेटेड नर्व और न्यूरॉन, रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन विदाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, विदाउट आरबीसी कास्ट। नॉट सीन इन पोलियार्ट्राइटिस नोडोसाइज, hemoptysis not seen, pulmonary arteries not involved, hemoptysis not seen, not associated with renal artery stenosis, glomerulonephritis is not seen, RBC cast not seen. बस छोटी छोटी आर्टरी से अफेक्टेड होती है। ओके, पल्मोनरी प्लस रीनल इन्वॉल्वमेंट किस किस के अंदर होती है? वीगनर्स के अंदर होती है, गुड पास्चर के अंदर। वीगनर्स के अंदर, वीगनर इज सीएम का पॉजिटिव, गुड पास्चर सिंड्रोम इज एंटी-जीबीएम पॉजिटिव, अल्फा 3 चेन ऑफ द टाइप 4 कोलेजन ऑफ द लंग प्लस रीनल, इनॉक्सिनोलिन परप्यूरा आईजी एलिवेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इनॉक्सिनोलिन परप्यूरा के अंदर आईजी एलिवेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पेन एब्डोमेन, IG elevated glomerulonephritis, pain abdomen, palpable purpura of the extensor surface, IG elevated pain abdomen, glomerulonephritis, palpable purpura of the extensor surface, platelet count is normal, IG increase in the IG nephropathy plus HSP, IG increase, IG nephropathy, IG increase in IG nephropathy plus HSP, Chakra syndrome is not plus vasculitis, Chakra syndrome is vasculitis. Two hours non-stop done. थोड़ी बात कर लेते हैं आप लोगों से। Hello guys. Sage, thank you. Riva Vijay, did you eat? No, I didn't. अब खाऊंगा मैं खाना। गुड आफ्टरनून यार, एक्चुअली पानी लेने गया था तो आपको लगा। संदीप कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंगेज होने के लिए। है सर, आप इंडियन में पढ़ाते थे? जी हाँ, पढ़ाता था मैं इंडियन में इन माई इनिशियल डेज, क्योंकि मैं पिछले 4.5 साल से पढ़ा रहा हूँ नीट यूजी वालों को, है ना, तो 4 साल तो ही गए। तो इंडियन, अध्यात्मन, KCI, पता नहीं कोटा की कौन कौन सी कोचिंग में पढ़ाया है। चलिए गाइस, एंड करते हैं इस सेशन को, खाना वाना खा लेते हैं। अब इसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि आज मेरी इवनिंग शिफ्ट है। वहाँ से मैं फ्री होऊंगा लगभग 9 साढ़े 9 तक। कोशिश करूँगा कि एक व्लॉग बना पाऊँ और यूट्यूब पर डाल पाऊँ। यार बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना ज़्यादा दिन में बिज़ी रहता हूँ। कोशिश रहती है मेरी यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए टाइम निकालूं, बट दोनों में से एक चीज़ के लिए हो पाता है। अब धीरे धीरे वापस जो है वो एक्टिव हो रहा हूँ मैं ऑनलाइन। वापस क्या मतलब, यूट्यूब पर एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इंगेजमेंट आप लोगों का साथ रहा तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम को आप लोगों ने बढ़ाने में मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दैट, फॉर ज्वाइनिंग आवर स्टडी सेशन, स्टडी लेक्चर। मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ जो है 2.5 से 3 घंटे, 2-2.5 घंटे का स्टडी सेशन एक रख लूँ और एक शेड्यूल अपलोड कर दूँ यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जिससे आप लोग क्या है इंगेज हो पाए रेगुलर। क्योंकि अच्छा रहता है, कोई स्टडी सेशन चल रहा होता है तो इट फील्स लाइक अ लाइब्रेरी। अकेले पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, पता है तुम्हें। अकेले जब आप पढ़ते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। अगर आप यूट्यूब लाइव पर पढ़ रहे हो तो आपने अपना फ़ोन बिजी कर दिया, तो यू वॉन्ट टच योर फोन नाउ, ठीक है। तो इट्स लाइक स्टडिंग इन अ डिजिटल लाइब्रेरी विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा, है ना, बेसिकली यही तो बात है। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का स्टडी सेशन। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका अपना बायोलॉजी मेंटर एंड डॉक्टर ऋतिक माहेश्वरी। लव यू ऑल, बाय बाय।